सबसे पहले यहाँ पे देखो कि व्हाट इज बायो एनर्जेटिक्स, ये है क्या चीज। ठीक है, तो बायो एनर्जेटिक्स इज द प्रोसेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ एनर्जेटिक्स accompanied with the biochemical reactions. Energetics, nature of the energetics accompanied with the biochemical reactions. बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हो रहा है उसके साथ साथ इनर्जेटिक्स में जो चेंज हो रहा है उसका क्या नेचर होगा, इसकी स्टडी हम लोग बायोकेमिकल बायो एनर्जेटिक्स में करते हैं। ठीक है, एंड द बायोकेमिकल accompaniment is associated with the rules of thermodynamics. It depends on the rule of thermodynamics. ये थर्मोडायनेमिक्स के रूल पे आधारित होगा। क्लियर? नाउ द टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। सब लोग आप लोग जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी and kinetic energy and kinetic energy. Potential energy and kinetic energy. The potential energy is associated with the configurational and biochemical organization. The kinetic energy is associated with movement of molecules. Movement of molecules और biochemical molecules, जो भी आप बोलिए, molecules और biochemical मॉलिक्यूल्स। सर्कल दो नेचर है यहाँ पर भी, एक है पोटेंशियल एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी। आप लोग पढ़े होइएगा इस सब चीज को। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब बंद नहीं हो गया। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो स्थिति हो, स्थिति क्या बोलते हैं, रुका हुआ। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें क्या क्या हो गया, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, हुआ ना, फोटिक हो गया, केमिकल हो गया, तो बायोलॉजिकल सिस्टम में हमको इससे मतलब है, फोटिक से और केमिकल से। फोटिक मीन्स लाइट, और दूसरा क्या हो गया, काइनेटिक, दैट इज द मूवमेंट। तो काइनेटिक में आप पढ़े होइएगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 क्या होता है, एम भी। एम इज द मास एंड भी इज द वेलोसिटी। V is the velocity. That means if you consider a body, अगर हम एक बॉडी को कंसीडर करें, that means the total energy, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, that is the total energy. And what is energy? What is energy? एनर्जी क्या है? व्हाट इज एनर्जी? फिजिक्स भी ठीक से नहीं पढ़ा, इंटर का चीज पूछ रहे हैं, नहीं बोल रहा। कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज द एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द वर्क, उसकी क्षमता कि वो क्या काम, कितना काम कर सकता है, दैट इज कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज द एनर्जी। एनर्जी का मतलब कैपेसिटी टू डू द वर्क। एंड हियर व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल, और one is joule, another is
calorie. 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू कितना कैलोरी? क्योंकि इसकी आवश्यकता है आपको आगे सबका, ये सबका आवश्यकता पड़ेगा। हाँ, 1 जूल इज इक्वल टू 239 कैलोरी एंड 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल। Both are necessary because during the energetics, and if you try to solve some sums in examination or in your practice questions, some energy is provided in the form of calorie and somewhere the energy is provided in the form of joule. So conversion is necessary. ये जो है conversion है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए. Then the thermodynamically, if you consider the thermodynamic aspects, then thermodynamically there are three rules. There are three rules. First rule of thermodynamics, second rule of thermodynamics, and third rule of thermodynamics. At first, we consider the first rule of thermodynamics. First rule of thermodynamics. What is the first rule of thermodynamics? First, it is right here simply that the energy is neither created nor destroyed. Second, it is the same, but in different sentence. In isolated system, the energy is constant. The energy is constant. Energy is constant. And it may be changed into another form in equivalent value. In isolated system, the energy is constant. Total energy is constant. Energy means the total energy. Energy means total energy is constant. And if it is changed, it is converted into equivalent value. तो ये जो convert होगा वो equivalent value में convert कर जाएगा. Third one, और इसको बहुत लंबा करने की आवश्यकता नहीं है. Suppose here, generally, the heat is energy is released from the system in the form of heat. Energy is commonly the energy is
converted into heat energy. Heat energy, heat energy to do a work. To do a work एनर्जी वर्क क्या लिखेंगे? is converted into heat energy to do a work. Then the here the energy is here the energy that heat and that heat is converted into the work. Clear? That means here suppose in a system heat is absorbed and A is converted into B. A is converted into B. In this system, if the system is indicated, now the A comes in the lowest energy level. Lowest energy level. It comes in the lowest energy level. That means here the energy is released in the system. The energy is released in the system. That means the energy may perform some work. May perform some work. That means E, that is B minus A. E, that is energy, that is B minus A. And the Q is E plus W. Q is equal to E plus W. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? वो जो है एनर्जी बी माइनस ए जो की है तो ज्यादा एनर्जी ए है और बी लो है तो ए माइनस बी होगा या बी माइनस? तो डिफरेंस इसी का होगा. कम में से ज्यादा कैसे हटा दीजिएगा? ज्यादा ए हुआ ना? अरे ज्यादा ये हुआ, ये एनर्जी बी आया, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो फिर ये एक्टिवेट कर जाएगा. ये हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी आ रहा है. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी. ठीक है? तो एनर्जेटिक्स के फॉर्म में बी माइनस वन ना एनर्जी होगा. सोचते रहो 2 घंटा रहो. और वो वाला भी सर Q इक्वल टू E प्लस W. बैठिए बाद में आराम से बैठिए. Q बराबर E प्लस W. एंड हियर Q is referred as E, that is the energy. Q is the heat. That means here enthalpy. What is enthalpy? Enthalpy is the heat contents. Heat contents of any system. Heat contents of any system. Why? So it is represented by H. Enthalpy is represented by H. That is the heat content. Heat content. The capacity of heat content energy is
referred as enthalpy. Referred as enthalpy. One thing here, the biological system is isothermic. Isothermic. Biological system is isothermic. So the work done by the receiving of the heat is not possible in the living system. It's not possible in the living system. Why so? The functional aspects of the thermodynamics with respect to the work done. ठीक है? The first law of thermodynamics is not applicable in the living system. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होगा बायोफिजिकल एस्पेक्ट्स पर, मतलब फंक्शनल एस्पेक्ट्स पर, ये लिविंग सिस्टम में, बायोलॉजिकल सिस्टम में लागू नहीं होगा. बिकॉज द हीट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क इन एनी लिविंग कंपोनेंट्स, बट इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ coupling reactions. It is stored in the form of coupling reactions. That is, the coupling reaction or the oxidative phosphorylation is responsible for the work done, and it provides the energy. ठीक है? Clear? So the first law of thermodynamics is not applicable as observed in the physical bodies. Clear? जैसे आप इंजन बनाते हैं तो इंजन में फर्स्ट रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लागू हो रहा है. ठीक है? जो आप भाप इंजन बनाते हैं या जो इंजन बनाते हैं, लेकिन वो चीज, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है. क्यों नहीं लागू हो रहा है? क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में, इन बायोलॉजिकल सिस्टम, द वर्क डन, जो वर्क हो रहा है वो हीट से एसोसिएटेड नहीं होता है. ऑफ कोर्स इट इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द कपलिंग इफेक्ट, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, all the potential energy in the biological system is fixed by the photic energy, sunlight, by the autotrophic plants in the form of glucose, and that provides the energy to the living system. But here I will again come on the enthalpy. The capacity of the heat content energy is referred as enthalpy, and it is symbolized by the H. Clear? The actual state of the enthalpy in any system is not determined. हम एक्चुअल जो enthalpy है किसी सिस्टम का, उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. ठीक है? ये मुश्किल है, ये हम नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं. सो वी ऑलवेज स्टडी द enthalpy इन द फॉर्म ऑफ difference of enthalpy. And here earlier we observed that Q equal to E plus W. Q is equal to E plus W. That Q is represent the complete heat contents of the system. That Q represents complete heat contents of the system. That means it represents the H. Here the work is converted into the PV. Pressure multiplied by the volume, PV.
That means the equation is converted into H बराबर E plus P V. H बराबर E plus P V. Then we considered that H1 is converted into H2, E1 is converted into E2, P1 is converted into P2, and V1 is converted into V2. But here, if you consider that this one becomes constant, this one becomes constant in the system. P is the constant. Pressure becomes the constant in the system. That means sorry, this one is E2 and this one is E1. This one. Difference of energy plus pressure, difference of volume. It represents the difference of the one, it represents the change of the enthalpy. This one represents the change in the enthalpy. ये क्या बतला रहा है? इंथैल्पी के चेंज को यहां पर. ठीक है. नाउ इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बतला रहा है. ठीक. अच्छा, एक मिनट, सम 1 minute. Suppose this one is the H1. Clear? H1 represented by, I am again writing here, E1 plus PV1. H2 is equal to E2 plus PV2. Clear? Now we H2 minus H1. H2 minus H1. E2 plus PV2 minus E1 plus PV1. Because P is the constant. P is the constant. Then this one is represented by delta H. That is the change of enthalpy. Change in enthalpy. That E2 minus E1, अब आप बोलिए ज्यादा क्लियर कर दे रहा है, प्लस PV2 minus PV1. That is difference of the energy plus P difference of the volume. Clear? अब कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, enthalpy, change of enthalpy, change of enthalpy.
Clear? Now, we comes on the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. What is the second law of thermodynamics? What is second law of thermodynamics? Energy? Energy content is? ये कैसे होगा? सेकेंड में ही कैसे हो जाएगा? ये कैसे होगा? The enthalpy responsible for the increase of randomness. The enthalpy is responsible for, sorry, entropy. Entropy is, इसको भी हटाइए अभी, it represents the randomness of molecules or system is increased. वो क्या होगा? रैंडमनेस क्या होगा? इंक्रीज होगा. दैट इज द entropy. That is the entropy. It is responsible for the randomness. In second way, if you write here, in the second way, it represents that the when energy is passes from one to another system, it must be attenuated. When passes from one to another system, it is attenuated. That is passes from one to another system. एक से दूसरे सिस्टम में जाएगा तो ये रेंडमनेस को बढ़ाएगा. रेंडमनेस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में क्या करेगा? वो रेंडमनेस को बढ़ाएगा. That means if it is responsible for the increase of randomness, then it is attenuated. Third one again, it comes to minimize the potential energy. Stage to minimize the potential energy. Moves to minimize the potential energy. मतलब ये अपने कम से कम पोटेंशियल एनर्जी के स्टेज में जाना चाहेगा. जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने कम से कम जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है उस स्टेज में जाना चाहेगा. ठीक है? दैट मीन्स द कंटिन्यूअसली द इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीजिंग. द यूनिवर्स represents increase in entropy. Increase in entropy. Entropy को ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. ठीक है? अब यहां पे एक सवाल आता है बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए. ये तो फिजिकल सिस्टम की बात है, ऐसा वो करेगा, ये उसकी प्रॉपर्टी है. बट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, अब आप जब बायोलॉजिकल सिस्टम में आते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे सेल डेवलप करता है तो ऐसा तो नहीं कि प्रोटीन अपने कॉन्फ़िगरेशन को लूज कर देता है या मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल लूज करके माइक्रो मॉलिक्यूल लेवल पे आ जा रहा है. तो जितना मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो क्या करेगा?
वो क्या करेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा। तो इसका उल्टा हो गया इसका मतलब। वो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। बिकॉज हियर इन द लिविंग सिस्टम वी कंसीडर द एनर्जी एज ए होल, एज ए होल। एक सिस्टम की बात नहीं हो रही है। दैट मीन्स इफ वी कंसीडर द कंप्लीट लिविंग सिस्टम इट रिप्रेजेंट द क्लोज सिस्टम। ये क्या बनाता है? क्लोज सिस्टम। इफ यू कंसीडर द वन सेल देन इट रिप्रेजेंट द ओपन सिस्टम। इफ यू कंसीडर द वन सेल, ये समझ रहे हैं ओपन क्लोज का मतलब? समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? अरे समझ रहे हैं कि नहीं? जल्दी बोलो ना यार। क्या होता है ओपन का मतलब? खुला हुआ। वाह, एक नंबर, बहुत अच्छा। हाँ, ओ रंग गाले पर अक्षर को क्लोज मतलब पूरा जो भी लिविंग है उसको सबको ले रहे हैं। ओपन आप लोग एकदम माने कैपिटल जो गधा होता है ना, गधी, वो आप लोग हैं। इन ओपन सिस्टम द एनर्जी एंड मैटर इज एक्सचेंज फ्रॉम द सराउंडिंग। In closed system, the energy and matter is not exchanged with from the surrounding. That is the definition of the open system and closed system. हम बोल रहे हैं कि the universe as a whole, the living system as a whole is a closed system. ये closed system है. But the cell is the open system. The one unit of the living component is open system. So the complexity is increased within the unit, and that unit is sufficiently responsible for the exchange of the energy and matter from the surrounding. So the complexity is not affected by the thermodynamic principles or the principles of the entropy. Principles of the entropy. अब आया बात समझ में कि नहीं आया? पूछ देगा, ये दांत चियार दीजिएगा कहीं जाके। तो ये जो कंपोनेंट हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यहां पे इंट्रॉपी बढ़ रहा है, लिविंग सिस्टम में भी इंट्रॉपी बढ़ रहा है। तो फिर इंट्रॉपी बढ़ने के साथ साथ इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डेवलप करेगा? दोनों तो एक दूसरे का विरोध कर दिया, इनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो डिफर कर रहा है। तो दैट इज because the energy is maintained regularly by the trapping of the solar energy by the photosynthetic plants. लिविंग सिस्टम में जो इंट्रॉपी का लॉस हो रहा है या हो सकता है, दैट एनर्जी इज मेंटेन्ड कंटिन्यूअसली। किसके द्वारा? बाय द ट्रैपिंग ऑफ द एनर्जी, सोलर एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हो रहा है ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज मेंटेन्ड बाय द ट्रैपिंग ऑफ द फोटिक एनर्जी फ्रॉम द कम्स फ्रॉम द सन। क्लियर? नाउ द enthalpy here again, the actual form or actual value of the entropy, actual value of the entropy is difficult to calculate. Actual value of entropy is also difficult to calculate. So we always use the difference of entropy for the study. एक्चुअल एंट्रॉफी इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। एक्चुअल जो एंट्रॉफी होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एक्चुअल एंट्रॉफी ऑफ एनी सिस्टम। सो वी ऑलवेज कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ entropy, difference of entropy, that represents the heat change divided by absolute temperature. Absolute temperature. Heat change described by absolute temperature. Absolute temperature क्या होता है?
व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? जानना चाहिए आप लोग को। दैट इज 273 केल्विन। 70 लिखा गया, 73 केल्विन, 273 केल्विन absolute temperature, and the absolute pressure is 760 mm Hg. Now it is equalized to 1 atm, 1 atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure. It is standardized. When you calculate the joule, अब यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू आएगा वो किसका वैल्यू आएगा? जूल का। लेकिन जैसे आप कैलोरी में लेके जाइएगा तो यहाँ पे भी चेंज करने लगेगा वो, तब सेल्सियस में चला जाना होगा। तो दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो हीट चेंज हुआ विथ रेस्पेक्ट टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल, इट इज रेफर्ड एज difference in the entropy. It is referred as difference in the entropy. ठीक है? तो here I am considering the Q value is equivalent to the internal energy. Q value को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? Internal energy. One thing another, that is the free energy. ये तो internal energy हुआ, उसके सिस्टम का एनर्जी हुआ। Then इफ वी कम्स, अभी हम बात बोल रहे हैं कि इफ वी कम्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, जब हम बायोलॉजिकल सिस्टम में आ रहे हैं तो जो इंथैल्पी या इंट्रोपी हीट के फॉर्म में है, यहाँ पर हम किसी के फॉर्म में इसको स्टडी कर रहे हैं? हीट के फॉर्म में इसको हम स्टडी कर रहे हैं, हीट के फॉर्म में। बट इन द लिविंग सिस्टम हीट हैज नो डायरेक्ट रोल इन द वर्क डन और ड्राइविंग ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस आइदर इन द फॉरवर्ड और इन द बैकवर्ड। ये जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए वो इरिवर्सेबल हो सकता है, रिवर्सेबल हो सकता है, जो भी हो सकता है, तो वहां पे हमारा हीट का कोई मतलब नहीं है। ऑफ कोर्स इट इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी, ये एनर्जी से एसोसिएटेड है लेकिन हीट से एसोसिएटेड नहीं है। बट इन द फिजिकल प्रिंसिपल और इन द फिजिक्स, the thermodynamic rules are directly associated with the work done and efficiency of the system with respect to the heat. फिजिक्स में जब हम बात कर रहे हैं तो वो हीट के रेस्पेक्ट में है, लेकिन इन बायोलॉजिकल सिस्टम बिकॉज इट इज द आइसोथर्मिक, वी आर द आइसोथर्मिक, जो सिस्टम काम कर रहा है वो आइसोथर्मिक है। ठीक है, आगे चलिएगा तो देखेगा पीएच भी मेंटेन करना पड़ता है। तो हियर द आइसोथर्मिक, सो हीट हैज नो डायरेक्ट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द thermodynamic principles, but the thermodynamic principles are maintained in the form of the energy, in the form of the kinetic energy and potential energy. ठीक है, potential energies are present in the form of bond, biochemical bonds. That is the potential energy. Why so I am described earlier, हम शुरू में ही आपको बतलाए हैं कि the two parts, one that is the potential energy, another is the kinetic energy. Kinetic energy is determined by the movement of the molecules, and potential energy is determined by the composition and configuration of the molecules. ठीक है, नाउ द क्या बोल रहे थे सब बीच में, एंड हियर द फ्री एनर्जी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, दैट इज द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द लिविंग कंपोनेंट्स और इन द लिविंग सिस्टम, ऑफ कोर्स इट इज ए सिस्टम, एंड हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फ्री एनर्जी, free energy, that means the energy released in the system, for the work or for the function. यहाँ पे वर्क का कुछ अलग मतलब है बायोलॉजिकल सिस्टम में, for the work and for the system, and it is also known as thermodynamic potentials.
thermodynamic potentials. Thermodynamic potentials. It is referred as the thermodynamic potentials, and thermodynamic potentials determines the relationship between energy, the relationship among energy, enthalpy, and entropy. And entropy. Thermic energy and entropy. The first one is Hodge function. Free energy. Helmholtz free energy represented by F. Helmholtz free energy represented by F. It is also known as functional energy of the system. It is also known as functional energy of the system. And it represents the free energy. That free energy equal to, write down, the free energy is equal to internal energy. Free energy is equal to internal energy minus temperature multiplied by entropy. Internal energy minus temperature multiplied by entropy. Internal energy minus temperature multiplied by entropy. Free energy बराबर internal energy minus temperature multiplied by free energy. It is represents Helmholtz free energy. Helmholtz free energy. Here F बराबर internal energy minus temperature multiplied by entropy. Multiplied by entropy. And here again, if we consider that this one of the two system, if you analyze the two system, because energetics of the one system is difficult to calculate. एक system का जब आप energetics को एनालाइज करना चाहिएगा तो वो डिफिकल्ट है. वी ऑलवेज यूज द इनर्जेटिक्स विथ रेस्पेक्ट टू द टू सिस्टम, विथ रेस्पेक्ट टू द अदर सिस्टम. एक सिस्टम के साथ तब इसको हम एनालिसिस करते हैं. एंड हियर द लाइकली द इसको ये करिए, आप लिखिए ठीक से. F1 is equal to E1 minus TS1. Here again it is the isothermic. Just I am writing earlier. बार बार हम बोल रहे हैं कि it is the isothermic. When the temperature is always maintained. That means the temperature is always maintained. That is F2 E2 TS2. If we want to determine the difference of the F, that is the functional energy. It always refers to the functional energy. It's equal to E2 minus TS2
माइनस E1 माइनस TS1, that is E2 minus E1 TS, that is this one TS. That means here the TS, and if we consider the S, then if you consider the S here, S is replaced by the QI. DE in the term of enthalpy, enthalpy. What is the value of delta E in the form of enthalpy? In the form of enthalpy. Delta E in the form of enthalpy. हो गया. डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा What is the form DH बराबर इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा डेल्टा E प्लस पी डेल्टा PdV. And if we consider the delta E, that is डेल्टा delta एच माइनस पी डेल्टा H माइनस minus पी डेल्टा पी डेल्टा P del. Here P is constant and B is constant. प्लस Then जीरो this one T is appeared, not 0. T is present here. That means the E बराबर delta H plus dV. P is constant. P and T is constant. So ये बाद में आप इसको देखिएगा, कन्वर्ट करिएगा, अभी कोई उसमें दिक्कत नहीं. इसको लिख लिए. Second one is that is the most important. It is not important as far as the Gibbs equation. That is the Gibbs. And the second one, it is the Helmholtz internal energy. It is responsible for the functional energy. Clearly, it is for the functional energy of the system. The second one is the Gibbs internal energy. Gibbs free energy. And the Gibbs free energy is enthalpy minus temperature into entropy. Gibbs energy represents the second one, that is the most important. That is the Gibbs energy. Gibbs free energy. Gibbs free energy. And Gibbs free energy is represented by G. Gibbs free energy is represented by G. That is enthalpy minus T entropy into entropy. T, that is the absolute alcohol. Absolute temperature. T is always mentioned in the form of absolute temperature. And here, that is G, that is E, enthalpy, that is the H minus TS. ठीक है? Here when we study the two systems, अच्छा एक चीज है, हम दो सिस्टम हमेशा क्यों बोल रहे हैं? दो सिस्टम जो बात कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम, और फिजिक्स वाली हैं वो तो समझ जाएंगे कि दो सिस्टम का मतलब एक इंजन है, दो चैम्बर हो गया तो दो सिस्टम हो गया, वहाँ पे दो काम हो रहा है. ये बायोलॉजी वाले के लिए दो सिस्टम कहाँ से आ रहा है? लाइफ साइंस वाले के लिए
नहीं, if you consider the two enzymatic reactions, sequential enzymatic reactions, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, या कोई एनाबॉलिक रिएक्शंस पढ़ रहा है, सिंथेसिस ऑफ द अमीनो एसिड्स पढ़ रहा है, या सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, तो इट इज नॉट ए सिंगल स्टेज रिएक्शन। और यही सब डिफरेंस होता है केमिस्ट्री में और यहां पर। इट इज नॉट द सिंगल स्टेज रिएक्शंस, इट इज, अब क्रेब्स साइकिल आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे क्या है, 8 कंप्लीट स्टेप्स है, 2 इंटरमीडिएट स्टेप्स है, 10 स्टेप्स वहां पे हो जाते हैं तुरंत। तो दैट इज द सीक्वेंशियल, एंड ईच स्टेप इज कंसिडर्ड एज ए इंडिपेंडेंट सिस्टम। हर एक जो स्टेज हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो रिप्रेजेंट्स द इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट इनर्जेटिक्स। ये इंडिपेंडेंट, यहीं पर रोहन कुमार नहीं पहुंच रहा था इसलिए कहीं खुई कर रहे थे। इट रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट इनर्जेटिक्स, ठीक है, ये हर एक अलग अलग को बतला रहा है। तो इसीलिए आपके दिमाग में सिस्टम का मतलब बैठा हुआ है पूरा सिस्टम, तो परेशान कर रहा है। तो दिमाग में बैठा हुआ है गोबर, अच्छा नहीं बोलेंगे आ जाए, G बराबर H प्लस H माइनस TS, एंड व्हेन G1 दैट इज H1 TS1, G2 that is H2 TS2, G2 minus G1 that is H2 minus H1 minus T S2 minus that is DG that is del H minus T, that is the Gibbs free energy equation for the Gibbs free energy। इसलिए इसको हम देख रहे हैं छूटे नहीं, गिब्स फ्री एनर्जी, इट इज द गिब्स फ्री एनर्जी। इसको क्या बोला गया, गिब्स फ्री एनर्जी। एंड व्हेन इन दिस वे वी कंसीडर द H and S, then we, if we want in the summation or in the calculation, अगर आपके पास कोई कैलकुलेशन आ रहा है, if it is not represented in the form of the H and S, दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है, जिस फॉर्म में आप H और S का स्टडी किए हैं उस फॉर्म में भी हो सकता है। तो देन यू एट फर्स्ट एनालाइज एंड डिटरमाइन द DH and DS, then you proceed to calculate the Gibbs free energy value, okay? And here when it is considered as the standard value, if we consider the standard value, अब यहाँ पे कमाल शुरू होगा। When we consider the standard value means when it represents the K value, मतलब temperature 273 Kelvin and pressure at the 760 mm Hg, it is considered as the standard. It is considered as the standard at particular molar level. If we consider the standard value at the K 273 Kelvin, actually to 273.15 Kelvin, and pressure that is 760 mm Hg or 1 atm, that is 1 atmospheric pressure, then it is referred as the DG naught. Then it is referred as the DG naught. DG naught. It is referred as the DG naught. DG naught के बाद क्या है? हाँ ठीक है, DG naught. And in this condition, it represents the work done. It represents the work done is represented as W max. That is the maximum work done. That is the W max. That is the maximum work done, and maximum work done is determined as the standard value of the Gibbs free energy.
Standard value of the Gibbs free energy. Gibbs free energy. Now it is by this way we simply determine the Gibbs free energy. And here the Gibbs free energy is calculated in the form of kilocalorie per mole. The unit of the Gibbs value is Gibbs free energy is the kilocalorie per mole. If you calculate it in the form of joule, then it is necessary to convert it into the form of the calorie. If you calculate it in the form of joule, then it is necessary to convert it into the value of calorie. एंड अदरवाइज अगर वो आपसे जूल में पूछ रहा है तो जूल में दीजिए, उसमें कोई, वो तो आपके ऊपर है, वो जैसे पूछेगा उसको वैसा जवाब देना है, बात खत्म. वो हम नहीं जानते कि जूल में पूछेगा कि कैलोरी में पूछेगा, हमको नहीं मालूम है. दैट मीन्स it is the value. And now the second one thing we want here, the ds, here the ds, clear? That means the value of the dg or dg naught. Suppose one molecule of glucose is completely oxidized. 1 mole of glucose is completely oxidized. एक उदाहरण के लिए हम बतला रहे हैं कि 1 मोल आपका जो है वो क्या हो जा रहा है, completely oxidized हो रहा है. तो कितना एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होता है? 1 मोल में कितना प्रोड्यूस होता है? हाँ बोलो, बोलिए नहीं राश, बतलाइए. इट इज वेरी बैड. ये तो इंटर कलर का बतलाएगा. हाँ 6. जोर से बोलना, क्या बोल रहा है? 6. काने खींच के लंबा कर देंगे. इफ यू राइट द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ glucose, that is C6H12O6 plus 6 H2O, that is 6 CO2 plus 6 H2O plus 686 kilocalorie. It is the complete oxidation process. And now here the 673 is its enthalpy. 673. 673 is enthalpy. 673 is the enthalpy. Now we consider here, or if anyone asks that what is the value of entropy? What is the value of? What is the value of entropy? What is the value of entropy? One thing more before moving forward. That is when the G value is represented 0. Represented 0. That means the equation is present in equilibrium state. It represents that the equation is present in equilibrium state. Present in the equilibrium state. When is negative, it is the negative. It represents the forward reaction or exergonic reaction. Forward reaction or exergonic reaction.
रिएक्शन और exergonic reaction when is positive, it represents the backward reaction or endergonic reaction. Backward reaction or endergonic reaction. Backward reaction or endergonic reaction. नींद आ रही है, चोरी कर रही थी रात में क्या? Backward reaction or endergonic reaction. And here both these values are, that means the both values are in negative or in positive. किसमें होगा ये रिएक्शन, ये वैल्यू निगेटिव में होगा कि पॉजिटिव में होगा? निगेटिव वैल्यू है ये दोनों निगेटिव वैल्यू है. In the form of the thermodynamics, both are negative value, दोनों ही negative. Now we consider the formula S, differences of S. क्या derive होगा इसका फॉर्मूला देख के बतलाइए तो. अभी गिब्स वाला जो मतलब उसमें फॉर्मूला क्या derive होगा? डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच अपॉन टी. डेल्टा जी जी. यस. अच्छा, ठीक, सही है, ठीक है. नाउ that is the 6 at 6 kilocalorie, 6 at 6 kilocalorie, that is minus 6 at 6. तो वो उल्टा हो गया. क्या उल्टा? अच्छा चलो ना, तुम बहुत कंफ्यूज करता है, रहो देखते हैं क्या हुआ. बीच में बक बक करने का आदत हो गया, ये नहीं होगा. देखिए कितना आ रहा है, कैलकुलेट इट. that is represented and here is the K value. ठीक है, you at first convert it into the C value. ठीक है, by adding in the living system two components are present. हम आगे भी बतला रहे, आगे बतला भी देते हैं. Either you calculate it at the 25 degree centigrade or at the 37 degree centigrade. If you can calculate it in the human being, it is always calculated at the 37 degree centigrade. क्योंकि आदमी का जो टेम्परेचर वो कितना माना जाता है? 37 degree centigrade. And if you consider in the biological system, then you calculate it at the 25 degree centigrade. That means you add here is the 25. Now that means it is the total is the 298. 43 आ रहा है, आने दो, अब जो आ रहा है कुछ नहीं हो सकता ये. That is added with the 25 degree centigrade, due to the 25 degree centigrade. And always आप याद रखिएगा कि in the examination when a question is asked at the different temperature, अगर वो टेम्परेचर मेंशन कर रहा है, you must add the same temperature of the centigrade to the 273 because it is always exceeded by the 1 degree. अगर 1 degree सेंटीग्रेड में बढ़ेगा तो 1 डिग्री केल्विन में भी बढ़ेगा. तो 273 is equivalent to the 0 degree of the centigrade. 273 जो होता है वो कितना के इक्विवेलेंट है? 0 degree of the
सेंटीग्रेड एंड व्हेन इट इज एक्सीडेड विद द टेम्परेचर देन यू ऐड, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप ऐड करते जाइए। वाई सो जो भी है, कितना आ रहा है 43, चलिए 43 आ रहा है, 43 आ रहा है, जो आ रहा है यार 43 एक्यूरेट 43, 43.6 हाँ जो आ रहा है वो लिखिए 43.61, जो आ रहा है वो लिखिए 43.61, 43.61 कैलोरी, 43.61 कैलोरी, इट इज कन्वर्टेड इनटू द कैलोरी। 273 जूल अगर होगा तो वहां पे ये ऐड नहीं होगा। इफ इट इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ जूल देन यू कांट ऐड द सेंटीग्रेड वैल्यू, तो वहां पे सेंटीग्रेड वैल्यू ऐड नहीं होगा। इसको याद रखना है कि अगर वो आपसे जूल में पूछ रहा है तो वहां पे 75 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर वो कैलोरी में पूछ रहा है तो वहां पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड होगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ द इंथैल्पी। ठीक है, ये वैल्यू किसका आ गया, सॉरी इंट्रोपी, वैल्यू ऑफ द इंट्रोपी। क्लियर? तो आप नाउ यू क्लियर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा जी एंड डेल्टा जी जीरो। क्लियर? यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हेन वी कम्स एट द मोलर लेवल, then when we determine the rate of reaction with respect to the energetics, which is the most important and commonly asked in the NET examination. And here that if you consider the relationship energetics and rate of reaction, rate of reaction, energetics and rate of reaction. What is the rate of reaction? यही है इसके बाद, हाँ यही है rate of reaction. ठीक है? And when we determine the rate of reaction, it is clear that the A plus B, that is C plus D. A plus B plus into C plus D. And when we want to determine the energetics, direction of the energy produced by a system in the biological system, यहां तक आपका जो होगा वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत अंतर नहीं आएगा अभी तक। एंड हियर द DG is equal to D0 dash plus RT log E DC divided by A concentration and molar concentration B। यही है ना? हाँ ठीक। DG बराबर G नॉट प्लस RT log E molar concentration of the D multiplied by the molar concentration of the C, that is the divided by molar concentration of E and molar concentration of the C. B. Here it is the extended free energy, extended free energy. It is the system free energy. This one is the rate of constant, gas constant, the rate of gas constant, that is 1.98 into 10 minus 3. 1.98 into 10 minus 3 calorie per mole. क्लियर? चलिए अब यहाँ पे जो ये जो कंपोनेंट आ रहा है इसको थोड़ा सा आप इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम हियर यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड आइदर यू दिस वन इज डिमांडेड और दिस वन इज डिमांडेड, या तो अब जी नॉट डैश डिटरमाइन करेगा माने स्टैंडर्ड जो एनर्जेटिक्स है, एनर्जी वैल्यू है, या चेंज ऑफ फ्री एनर्जी डिमांड करेगा। ये रिएक्शन का मोलर वैल्यू दिया होगा या रिएक्शन बनाया गया होगा क्वेश्चन में। अगर रिएक्शन बनाया गया है तो यू शुड एट फर्स्ट द
इक्वलाइज द सिस्टम। उसको क्या करना होगा? आपको इक्वलाइज करना होगा। इक्वलाइज करने आता है ना कि नहीं आता है? सब मुंह देख रहा है सब बाप। यस सर। इसके मोलरिटी मोलर वैल्यू को इक्वलाइज करना होगा। वो इक्वलाइज इक्वेशन को जो इक्वलाइजेशन आप करते हैं किए हैं ना इंटर वगैरह में, वो वहां पे नहीं होगा। वहां पे आपको इक्वलाइज करना पड़ेगा। अगर दे दिया इक्वलाइज करके तो अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए अभी हम लिखे जस्ट आई एम राइटिंग दैट C6H12O6 प्लस 6 नहीं O2 लिखे होंगे ना, CO2 लिख दिए हैं क्या? 6CO2 plus 6H2 plus 686 रिएक्टेंट्स का पूछ रहे हैं यार। 6H12O6 plus 6H2 हाँ तो वहां तो ठीक है। 6CO2 plus 6H2 plus 686 हाँ तो वहां पे जो इक्वलाइजेशन है, इफ जो आगे आगे 6 लिखा हुआ है वो नहीं होगा, क्योंकि मोलर वैल्यू वो डिटरमाइन कर रहा है। तो वो जब नहीं होगा तो आपको परेशानी होगी। उसको इक्वलाइज करना होगा। ऐसे बनेगा तो गलत हो जाएगा, वो उसका आंसर नहीं आएगा। तो इक्वलाइज देन दिस वैल्यू इज प्रेजेंटेड। ठीक है, ये वैल्यू प्रेजेंट होगा। बट ए शॉर्टकट मेथड इज प्रेजेंट एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी हम बोल रहे हैं, एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बिकॉज हियर दिस वन, इफ यू दिस इक्वेशन इज कन्वर्टेड अगेन, अगर इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं, नाउ द डी जी इज इक्वल टू, सॉरी भी बहुत झंझट है जी इसका। सॉरी, अच्छा ठीक है। 2.302 लॉग, सॉरी फिर हटा और आसान कर देते हैं इसको। देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां पे आपको करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इफ इट इज मेंशन्ड दैट द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर वो मेंशन कर रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो कहां पे है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में है, तो ये आरटी वगैरह जितना वैल्यू है सबको हम सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं टोटल। ठीक है, सीधे आपको लिखना है प्लस इसके लिए 25 के लिए 1364 1364 कहां तक के लिए? यहां तक के लिए। कब? when this one is represented by k equilibrium, this one is represented by k equilibrium, or in the question if this molarity is present but it is mentioned that the reaction is in equilibrium, दोनों में अगर कोई कंडीशन मिल रहा हो तो, then if the any C value is not mentioned, अगर C value mention नहीं कर रहा है, then it is understood that you calculate the value at the 25 degree centigrade। ठीक है, अगर वो मेंशन कर रहा है तो जो मेंशन कर रहा है उस पर बनाइए। लेकिन इसी दो में से कोई देगा, या तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड देगा या 37 डिग्री देगा। तो 25 के लिए आप याद रखिए 1364, और 37 के लिए आप ऑलवेज याद रखिए 1419।
1419. You always remember. Now, इतना का जो पार्ट है, this part is neutralized and calculated by this digits value. ठीक है, ये digits value के रूप में इक्वलाइज है, बट इन ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ द कैलोरी, इन द फॉर्म ऑफ द कैलोरी. अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि इसके इक्वेशन में माइनस होता है. ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में माइनस होता है. आई एम नॉट आस्किंग दैट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द माइनस फॉर्म. अगर वो इंडरगोनिक फॉर्म जैसे इक्वलाइज होगा तो वो आपको उस ढंग से बनाना है. एंड देन व्हाई सो दिस वन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज प्रेजेंट इन द के इक्विलिब्रियम. के इक्विलिब्रियम मींस दैट one is equivalent to this one. The rate of forward reaction and rate of backward reaction both are equal. It represents the equilibrium state. And if it is in the equilibrium state, you remember only that 1364 for the 25 degree centigrade and 1419 for the 37 degree centigrade. Clear? कोई दिक्कत नहीं है. Again we come on the biochemistry, that is lafra is here. Whensoever we study the physical properties and physical chemistry properties of physical chemistry and properties of the chemistry, all are independent from the pH. वहां पे pH कोई मतलब नहीं रखता. बट इन द बायोकेमिस्ट्री, इन द लिविंग सिस्टम, all the enzymatic reactions and metabolic reactions are directly or indirectly associated with the pH. pH means that is the release of H plus ion in the medium. This ion is present in the medium, and that H plus ion is responsible for the effect on the rate of reaction. That H plus ion effect on the rate of reaction. Why so? The actual G naught value is not same as observed in the physical system. जैसा कि हम फिजिकल सिस्टम में ऑब्जर्व करते हैं, मतलब फिजिक्स या केमिस्ट्री के सिस्टम में ऑब्जर्व करते हैं, ये जी नॉट वैल्यू सेम रिएक्शन के लिए मैन के कंडीशन में या लिविंग सिस्टम के कंडीशन में सेम नहीं होगा. And commonly we commonly observed that the normal temperature of the biological system is 7. That is in the molality 10 minus 7. In the molality is the 10 minus 7. That means the G naught value, differences of the G naught value is not same. ठीक है, it differs, and that is represented by G naught dash. G naught dash. Why so? In the biological system, you rarely observe the G naught. You always observe the G naught dash in the bioenergetic processes. In the bioenergetic processes. And if we observed commonly at the -7, then we observed that dG0 is equivalent to d G naught minus 40 calorie. Minus 40 calorie. And here the equation is again determined in the form of the H plus ion. Here this one, oh, that I erases, that this one B, C, D. If you observe the K1 here, that means one part is determined by the, this one part is always determined by the
H plus ion. Determined by the H plus ion. And that H plus ion is directly associated with the kinetics of the reaction. Clear? कितना देर हुआ जी?